So, we are going to start with our new chapter, that's chapter number 7 of the class 10 science one, that is lenses. So, लेंसेज चैप्टर से आगे बढ़ने से पहले अगर आपने रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट का चैप्टर के जो वीडियोस है वो अगर नहीं देखे होंगे सो प्लीज वॉच दैट वीडियोस फर्स्टली एंड देन स्टार्ट विद द चैप्टर 7 लेंसेज बिकॉज जो चैप्टर 6 है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट वो बेसिक है इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा समझ लीजिए देख लीजिए और फिर लेंसेज चैप्टर के साथ आगे बढ़िए सो the points or the topics which we are going to learn in this chapter that is lenses तो lenses के बारे में पढ़ेंगे rays diagram for the refracted light sign convention देखेंगे working of the human eye and lenses defects of the vision and their correction uses of the lenses and many more topics तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है lenses can you recall indicate the following terms related to the spherical mirrors in the figure 7.1. Poles, center of curvature, radius of curvature, principal, focus, etc. These are all with the help of these are all the points which we have studied in the class 9, that is the reflection of the light chapter. How are concave and the convex mirrors constructed? और जो mirrors के बारे में था वो हमने क्लास 9 में स्टडी किया था सो इस बार इस साल जो कि क्लास 10th में हम देखने वाले हैं लेंसेस के बारे में सो लेंसेस क्या है उसके बारे में पहले हम देखते हैं सो लेंसेस you must have seen lenses used in day-to-day life. Some examples are the lenses used by the old persons for reading, lens embedded in the front door of the house, the lens which the watchmaker attaches to his eye, etc. Lenses are used in the spectacles. They are also used in the telescopes, as you have learnt in the previous standard. और इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो हमने क्लास 9 में देखा था कि लेंसेस हम मतलब कौन सी जगह पर हम लेंसेस दिखाई पड़ते हैं हमें दैट इज ओल्ड पर्सन यूज लेंसेस व्हाइल द रीडिंग लेंस एम्बेडेड इन द फ्रंट डोर जो कि हमारे हाउस का जो फ्रंट डोर होता है उसके यहाँ पर जो लेंस होता है जिसे हम पिन होल कहते हैं through which we can able to see the outside if the person is standing or not the lens which the watchmaker attaches to his eye मतलब जो watchmaker होते हैं जो उनके eye को वहां पर अटैच करते हैं लेंस फॉर डूइंग द रिपेयरिंग ऑफ द वॉचेस एंड ऑल सो हेलो पीयूष हेलो एवरीवन मैं आपके चैट को आंसर करने का मतलब फर्स्टली हम ट्राई करते हैं कि सीखने पे ज्यादा फोकस करते हैं अगर आपका इसके बीच में कोई अगर आपका डाउट होगा देन यू कैन आस्क इन द लाइव चैट बट मेजर फोकस हम यहाँ पर करते हैं सबसे पहले So lens are used in the spectacles. They are used in the also used in the telescopes, as you have learnt in the previous standard. मतलब previous standard में हमने lenses जो है वो spectacles में use किए जाते हैं. These are all we have studied about all these things. A lens is a transparent medium bound by the two surfaces. The lens, which has the two spherical surfaces which are puffed up outwards, is called as a convex or double convex lenses. This lens is thicker near the center as compared to the edges. The lens with both the surfaces spherical on the inside is called as a concave or double concave lens. This lens is thinner at the center as compared to its edges. मतलब यहाँ पर दो टाइप्स के जो लेंसेस है दैट इज वन कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस और एक जो है वो कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस सो कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या है मतलब दोनों के इसमें डिफरेंस क्या है सो द लेंस विच हैज द टू स्फेरिकल सरफेसेस विच आर पफ्ड अप आउटवर्ड्स मतलब जो ऐसे लेंस जिसका मतलब जो सरफेस है वो आउटवर्ड्स के यहाँ पर पफ्ड है मतलब आउटवर्ड सरफेस पे वो बाहर आया है दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कंपेयर टू इट्स द एजेस मतलब ये जो टाइप ऑफ द लेंस होती है that it is thicker at the center and as compared with the edges. This lens with both the surfaces on inside
और जो लेंस होती है जिसके दोनों सरफेस कर्व्ड होते हैं इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एज द कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस। अगर आप ध्यान से अगर इस चीज को देखेंगे, सो ये जो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जो स्टडी किया था लास्ट स्टैंडर्ड में, क्लास 9th में, सो ये उसका उल्टा है। एज वी हैव सीन अबाउट द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर जो होता है उसके सरफेस जो होते हैं वो मतलब बाहर के यहाँ पर आउटवर्ड पफ्ड होते हैं, ये मिरर के इस केस में हो गया। और जो कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं वो इनसाइड पफ्ड होते हैं। बट कॉन्वेक्स के इस जो लेंस होती है, लेंस में ये उल्टा है। कॉन्वेक्स के जो है वो आउटवर्ड्स पफ्ड है, और कॉनकेव के इसमें इनसाइड। So this is the difference between the concave mirror, convex mirror, and concave lens and convex lens. This lens is thinner at the center as compared to its edges. Different types of the lenses are shown in the figure 7.2. A ray of light gets refracted twice while passing through a lens, once while entering the lens and once while emerging from the lens. The direction of the ray changes because of these refractions. Both the surfaces of the most lenses are the parts of the sphere. और यहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, दैट इज द ऑब्वियसली इट इज ऑफ द लाइट। सो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्क कर रहा है दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, जो कि मैंने पहले भी आपको बोला दैट फॉर दिस चैप्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट जो है एक बेस है। बिकॉज ऑफ द विदाउट हैविंग द नॉलेज विद द चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, नो वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द लेंसेज। कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के जो हमने रूल्स देखे थे, व्हेन लाइट एंटरिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो वही जो रूल्स है जो यहाँ पर लगने वाले हैं, दैट विल बी द एक्टिंग एज द इम्पोर्टेंट रोल फॉर studying the concepts related with lenses. So a ray of the light gets refracted twice, मतलब जो लाइट की जो रे है वो रिफ्रैक्ट हो रही है ट्वाइस व्हाइल पासिंग थ्रू द लेंस, वंस व्हाइल एंटरिंग द लेंस। मतलब जब लाइट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। सो सपोज ये लेंस है, यहाँ पर जो रेयरर मीडियम है, लेंस का डेंसर मीडियम है ऑब्वियसली। सो रेयरर मीडियम सपोज एयर ही है, यहाँ पर एयर एज अ मीडियम। सो रेयरर टू डेंसर एक ट्रेवल करेगी और वापस डेंसर से रेयरर में जाएगी। तो वापस मतलब यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन होगा, रेयरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। So to twice refraction we are able to see in the case of the lenses. So this may ask in the complete the following in the exam, a ray of the light gets refracted twice while passing through the lens. So keep in mind that जो रिफ्रैक्शन होता है लेंस में लाइट का, सो वो दो बार होता है, once while entering the lens and once while emerging from the lens. Direction of the ray changes because of the refraction. Both the surfaces of the most lenses are parts of the sphere. और जो यहाँ पर कहा गया है पार्ट्स ऑफ द स्पीयर, सो लेंस कैसे यहाँ पर फॉर्म हुई है। सपोज दिस इज वन स्पीयर, आप हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज वन ऑफ द स्पीयर, और एक स्पीयर है, और वो स्पीयर का जो पार्ट है कन्वर्जेंस का, दैट इज द लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेंस। दोनों स्पीयर कॉन्वर्ज किए तो मिल गई कॉन्वेक्स लेंस। दोनों स्पीयर सेपरेट किए और जो यहाँ पर लेंस बन रही है दैट इज द कॉनकेव लेंस। So next we are going to see here are the different types of the lenses. Uh, this is not much important but may ask in the exam in your school exams related with the types of the concave convex lenses. So biconvex lens होती है, plano convex lens होती है, पॉजिटिव मिनिस्कस होता है, बायकॉन्केव लेंस होती है, प्लानो कॉन्केव है, निगेटिव मिनिस्कस है। So these are all the different types of the convex and the concave lenses. So these names we have to keep in remember it. The cross sections of the convex and the concave lenses are shown in the parts A and B of the figure 7.3. Surface marked as the 1 is the part of the sphere S1, while surface 2 is the part of the sphere S2. So, center of curvature, radius of curvature, principal axis, optical center, principal focus, ये जो सारे terms है that we have studied with respect to the mirror as in the class 9. बट हम ये सारे टर्म्स जो है, सारे concepts है, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं as with compared to the lenses.
So center of curvature क्या है? The center of the spheres whose parts from the surfaces of the lenses are called as the centers of the curvatures of the lenses. A lens with both the surfaces spherical has two centers of curvature C1 and C2. So यहाँ पर जो लेंस है, so lens is center of the spheres whose parts forms the surfaces of the lenses are called as the center of curvature. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि C1 और C2 जो these two are acting as the center of the curvature for the lens. So a lens with both the surfaces spherical has the two centers C1 and C2. लेंस को कितने दो सेंटर होंगे C1 and C2. Radius of the curvature are the radii R1 and R2 of the spheres whose parts form the surfaces of the lenses are called as the radii of the curvature of the lens. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. सो ये दो डेफिनेशन अगर आपको पूछे गए एग्जाम में मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस डिफरेंट मतलब टर्म्स रिलेटेड विद द लेंस एंड एक्सप्लेन विद दैट. सो एक्सप्लेन के लिए क्या होगा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर ये आपको एक्सप्लेन करने होंगे. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि डेफिनेशन है दोनों की सेम ही है. सेंटर ऑफ द स्फीयर्स हुज पार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर और द रेडाई ऑफ द स्फीयर्स हुज पार्ट्स फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड एज द रेडाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस. सिर्फ यहाँ पर सेंटर लिखना है, बाकी सब पार्ट सेम है. यहाँ पर रेडाई लिखना है, दैट इज R1 एंड R2. रेडाई बिकॉज R1 and R2 are the two radius और सेंटर जो है C1 and C2 है. So these are called as the radii of the curvature of the lens. Principal axis. The imaginary line passing through both the centers of the curvature is called as the principal axis of the lens. Principal axis क्या है? The imaginary line है जो कि पास हो रही है दोनों सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, उसे हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ऑफ द लेंस कहते हैं. Next is optical center. The point inside a lens on the principal axis through which light ray pass without changing their path is called as the optical center of the lens. In figure 7.4, rays P1, Q1, P2, Q2 passing through the O are going along a straight line. Thus, O is the optical center of the lens. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं that is the P1, Q1, P2, Q2. This is the line. Then P3, Q3. These are all passing through the centers of the lens. So these are all passing through the without changing their path. They are passing through the principal point inside the principal axis, and due to this, it is called as the optical center of the lens. Principal focus. When light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they converge to a point on the principal axis. This point is called as the principal focus of the lens. मतलब एक लाइट रे जो ट्रेवल कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द इमेजिनरी लाइन which is passing through the both the centers of the curvatures. और प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर क्या है? लाइट रे when a light rays parallel to the principal axis are incident on the convex lens, they converge to a point on the principal axis. This point is called as the principal focus of the lens, as shown in the figure 7.5a. और क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि light rays parallel to the principal axis which are getting converged at a point of the contact. That point is called as a principal focus. नेक्स्ट है F1 एंड F2 आर द प्रिंसिपल फोका ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ पर F1 और F2 जो है वो प्रिंसिपल फोका है ये कॉन्वेक्स लेंस के. Light rays parallel to the principal axis falling on a convex lens come together, that is get a focused at a point on the principal axis. So this type of the lens is called as a converging lens. मतलब convex lens जो है that we are called as a converging lens. Rays traveling parallel to the principal axis of a concave lens diverge after refraction in such a way that they appear to be coming out of the point on the principal axis. This point is called as the principal focus of the concave lens, as shown in the figure 7.5b. F1 and F2 are the principal foci of the concave lens. Light rays parallel to the principal axis falling on a concave lens go away from the another, diverge after the refraction. So this type of the lens is called as a divergent lens. यहाँ पर जो बोला गया है सिंपल सी बात है कि कॉन्वर्जिंग लेंस क्या है कि light rays which are traveling parallel to the principal axis gets converged at a point which is called as a principal focus of that particular convex lens, that is converging lens.
F1 and F2 are the foci of that, and that type of the lens is called as a converging lens. Similarly, यहाँ पर जो है कि light rays gets diverge, और जब हम उसे trace back करते हैं, so they meet at one point. That point is called as the principal focus of that concave lens, which is also called as a diverging lens. Or F1 and F2 are the foci of the concave lens, that is diverging lens. सो सिंपल है, कॉन्वेक्स लेंस जो है दैट आर कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग लेंस, और जो कॉन्केव लेंस है दैट आर कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग लेंस. फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ. यानी जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, सो दैट टाइप ऑफ दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस. So these are all where the points or the terms which related with the lenses. So we have to definitely a question may ask in the exam regarding with this, that explain the terms related with the lenses. So आपको लिखना है center of curvature, radius of curvature, principal axis, optical center, principal focus, focal length. And don't try to mug up the definitions as I have explained in the simple manner. Keep the diagram in front of your eye and try to recall regarding with the terms related with that particular lens. सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, मटेरियल, कॉन्वेक्स लेंस, स्क्रीन, मीटर स्केल, स्टैंड फॉर द लेंस, एक्सेट्रा. कीप द स्क्रीन फिक्स्ड, obtain a clear image of a distant object like a tree or the building with the help of the lens on the screen. Measure the distance between the screen and the lens with the help of the meter scale. Now turn the other side of the lens towards the screen. Again obtain a clear image of the distant object on the screen by moving the lens forward and backward. Measure the distance between the screen and the lens again. What is the distance between the lens and the screen called? Discuss the relation between this distance and the radius of curvature of the lens with your teacher. The image of the distant object is obtained close to the focus of the lens. Hence, the above distance is the focal length of the lens. What will happen if we use concave lens in this experiment? So, यहाँ पर जो हमें एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है, वी हैव टू कीप वन, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस लेनी है, एक स्क्रीन लेनी है, मीटर स्केल लेनी है, स्टैंड फॉर द लेंस. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच यू विल फाइंड इन योर एक्सपेरिमेंट बुक. There you will be finding the theory and all, and in your schools and the labs you can perform that this experiment under the guidance of the lab expert. So ray diagram for the refraction. सो रिफ्रैक्शन, हमने रे डायग्राम्स देख लिए थे रिफ्लेक्शन के, इससे क्लास 9th में. सो इस साल क्लास 10th में दैट रे डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन इज देयर. सो you have learned the rules for drawing the ray diagrams for the spherical mirrors. Similarly, one can obtain the images formed by the lenses with the help of the ray diagrams. One can obtain the position, size, and nature of the images with the help of these diagrams. So ray diagrams क्या है? Basically, we are changing the position of the lens and we are obtaining the images as placing the lens at the different points. So images formed by the convex lenses. One can use the following three rules to draw a ray diagram of the images obtained by the convex lenses. कॉन्वेक्स लेंस सुनते ही हमें हमारे दिमाग में आना चाहिए दैट इज कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस दैट द रेज विल कन्वर्ज एट द पर्टिकुलर पॉइंट. उसके लिए रेज डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल है, और रे डायग्राम पे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो रूल 1 क्या है? व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. यानी जब इंसिडेंट रे व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द imaginary line passing through the focus. So, when a incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. जो कि refracted ray है वो principal focus से pass होगा. This is the first rule. Then second rule is when the incident ray passes through the principal focus, refracted ray is parallel to the principal axis. यानी उल्टा, when incident ray is passing through the focus, reflected ray, that is refracted ray is parallel to the principal axis. Or when the incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction. यानी incident ray जब optical center से pass होगा, so it does not get refract
it directly passes without changing its direction. So these are the three important rules for drawing any of the ray diagram for the convex lenses. So ये जो एक्सपेरिमेंट है दैट ऑल्सो इन योर लैब एक्सपेरिमेंट यू कैन ऑब्जर्व ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है एक कैंडल है कॉन्वेक्स लेंस है और स्क्रीन पर हमें इमेज ऑब्टेन करनी है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है प्रिंसिपल फोकस है F1 F2 then 2 F2 2 F1 और we are just changing the position of the candle and we are obtaining the images on the screen and we are seeing that how the images are obtained as we are changing the position of the candle और लेंस से हमें पोजीशन कैसे मिलती है दैट आर ओनली द रे डायग्राम विच आर obtained. So till now if you are having any doubt related with the concept any which I have explained now you may ask in the live chat regarding with that. So यहाँ पर जो है what are the real and the virtual images? How will you find out whether an image is real or virtual? Can a virtual image be obtained on a screen? So these are all the can you tell think about all these stuff. As shown in the figure 7.7, an object AB is placed beyond the point 2F1. The incident ray BC, starting from the B and going the parallel to the principal axis, goes through the principal focus F2 after refraction along the CT. The ray BO started from the B and passing through the optical center O of the lens goes along the OS without changing its direction. It intersects CT in the B dash. This means that the image of the B is formed at the B dash. यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है ए बी सो लाइट रे passes through the parallel to the principal axis will pass through the focus यहाँ पर फोकस से पास हो गई then using the third rule that is light ray passing through the optical center directly passes straight without changing the direction और यहाँ पर A dash B dash यहाँ पर इमेज मिल गई है. As A is situated on the principal axis, its image will also be located along the principal axis at A dash, vertically above the B dash. Thus, A dash B dash will be the image of the AB formed by the lens. So we learn that if an object is placed beyond 2F1, the image is formed between the F2 and 2F2. It is real and inverted and it's smaller in size than the object. सो यहाँ पर क्या है कि कहा गया है कि सो व्हेन वी लर्न दैट इमेज मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं हम बियॉन्ड 2F1 मतलब 2F1 के पीछे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेस करते हैं सो इमेज हमें कहाँ पर मिलेगी बिटवीन F2 एंड 2F2 और जो इमेज ऑब्टेन होगी दैट विल बी द रियल inverted and its size is smaller than the size of the real object. Study the figure 7.8 determine the position, size and nature of the images formed for the different positions of an object with the help of the ray diagram. Check your conclusions and observations in the previous activity with the given table. और एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है सो कॉन्वेक्स लेंस लेना है कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम्स हमें ड्रॉ करने हैं इसके लिए सो यहाँ पर इस टेबल में सिर्फ हमें व्हाट विल बी द कंक्लूजन एंड द आउटपुट obtained फॉर दैट पर्टिकुलर इमेज दैट इज गिवन हियर लेकिन हमें ये करके देखना है सो यू हैव टू डू दिस दैट एट इन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी position of the image will be obtained at the focus f2 point image real and inverted so beyond 2f1 अगर प्लेस किया वो यहाँ पर ये आपको रेफरेंस यहाँ पर डायग्राम दी गई है so we have to you have to apply these three rules which we have studied regarding with the convex lens and we have to try to draw the diagrams related with this although taking the positions of the object beyond 2f1 at 2f1 between f1 and 2f1 at focus f1 between f1 and o and try to see that which type of the image is obtained that is real or inverted virtual or erect and at the what position the object मतलब जो image है वो कहाँ पर मिल रही है और size of the image क्या है. Please keep study this table in detail as this table is most important as with respect to the exam
ये 100% गारंटेड है कि ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है. Next part, we will be studying regarding with the concave lenses in the next part. And if you like this video or the content, then do like, share, and the subscribe the channel. And also press the bell icon notification so you will be able to get the notifications and updates of the live. अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट होगा, so you may answer in the ask in the comment. I will try to answer the questions which will be asked in the comments and all. So thank you for joining. Thank you.